Good morning, student. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Today, I will be discuss the fourth physical state of matter. The fourth physical state of matter is plasma. We will also tell about the main physical state of matter, number of three, which are those. Number one is solid, liquid, and gases. But after of all, number of two stage also is count with to physical state. These are one is plasma, or second is BEC, means Bose-Einstein condensation. Okay, so today I will be discuss the definition about plasma and Bose-Einstein condensation also. Okay, let's go. Nirav Niskar P condensate, Nirvan Niskar plasma. Okay, Raptor Max, Nitin Kumar, Ashish Singh. Okay, Raptor registration number, Ashish Kumar. Okay. What is plasma? The definition of plasma is due to high temperature, inside the star or the atom of star break up some electrons from broken atom to this atom means to this atom, and go away, leaving behind some charge. On atom of form ion means
Huge type of ions. The mixture is the mixture of ion is mixture of ions and free electron ions star is known as plasma. Due to high temperature inside the star and the atom of star break up after the atoms when it will break up. Which type of breakup? The breakup is also when the when you take any atom and atom is surrounding part have number of huge electrons, and when the electrons removed from an atom, then it's called ion. Is it right? Are you know? When a atom released or accept, then it will be called ion. Why it's called ion? Usman, it is don't matter how much time chapter take to finish. We each understood the chapter that matters. Okay, okay. Please listen my talk and what do I say about plasma? Due to high temperature, with respect to how high temperature, we are does not. With respect to high temperature, the atom of star break up and some electrons from broken atom and go away, leaving behind some change of atom of form ions. Example: sodium is an atom. When it released number of one electron, so it will present an ion, positive ion. Here does not matter with respect to positive or negative, only ions. Okay. Are you understand clearly, student? Please comment me. Due to high temperature inside the star, to this type of form, plasma theory. Okay. Aman Kumar, plasma theory. Today I discuss about plasma. What is plasma and how build plasma, and the total description. The total description about the plasma, how build plasma, what is plasma state, and how it is respond, and etc. etc. Its which part and which part of materials or ions or electrons, how this form or how this build to this phase or physical phase or state of matters. Okay, that's like the stars, suns, etc. etc. Where the plasma cell is present in there. Plasma cell means sorry, plasma state. Plasma state is present in there. As like the stars, stars means sun or any other stars maybe. Okay, they are also have the condition of high temperature, and the atoms also break up and some electrons from broken atom, means therefore only for one electrons from here broken from sodium atom, and it will present a sodium ion. There, this is an example to identify it or to describe this type of sentence. And there have this type of atoms where it will be released number of huge electrons, and these atoms go away leaving behind some charge of atom from ions. So
this type of atom release their number of fused electrons or number of free electrons and charge also. The charge means positive. The charge means electrons which are comes out from these atoms, and the ionic part which is so any class as an example as well as an example. Then the mixing part of ions and electrons. Atoms is referred to ions and number of electrons both are when component and mixture, then it is called plasma state. Are you understood, sir? Are you understood, student? Sir, read all this what you wrote right. Okay. I also repeat. Due, please listen carefully. Due to high temperature inside the stars, the atom, the atom of star break up some electrons from broken atom, go away, leaving behind some charge on atom of form ions. The mixture of ions and free electrons ions star is known as plasma. Okay. Share example. Example starts. How many times tells about this? I also clearly giving this example. Stars. How many type of particles are given? Many type of stars. And as well as example, sun is also star. So they are this type of condition will happen at atoms. Okay, sir, please repeat. Okay, and then please repeat. Thank you, sir. Only stars? No. Also have more examples. And this is the condition state of where to this type of condition where atom is break up and presents the huge type of electrons and the ionic part also build, and to this part of mixture they are from electrons and ions, where this condition is applied or built up. So to this type of stage with respect to this condition also must be respected with temperature. Due to high temperature inside the stars. उसके अलावा due to high temperature means inside the stars, atom of star break up some electrons from broken atoms to this type of condition. Where the first stage is its and the second stage is atom present ions, and its third stage is ions and atoms. Ions are electrons. Ions and electrons both are combined or mixing after all the present which state. That's present to this type of state. Then it's called plasma. Okay. So give example. It's a star. Okay. The gas which is inside the mercury example. Okay, that's also, this is the one type of example. We also says that because the mercury have a higher conductivity properties with respect to temperature, or due to temperature it will be to this type of stage where it will be ionic state, and gas also a
the stage of various stage of one type of stage of physical properties. So the both type of condition will be mixed in there. It will be called a plasma state. Plasma stage of physical state also. Okay. Okay. So okay. Thanks a lot. Does anybody tell me how many students are in there? The next part is, have any doubt about plasma? Student, please respond. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Or also one type of. So I will little part tell about plasma. Sun have 99%, 90% plasma, 99% plasma, because it will totally to this type of reaction happen in the air, and after reaction this type of state will be present also in the air. There are huge type of hydrogen gas also present in the air. You also read out the reaction of nuclear or fusion. Okay, there are more number of hydrogen atoms also present in there. So gases and so particles, and they are also present to this type of state of physical state of matter. Are you understood clearly? Divya Singh, please again plasma. Okay. Plasma is a stage, the condition of due to high temperature, and the second part is which atom which to build its ion its atomic part, and atomic part also release few number of electrons, and number of electrons, when a atom will be released few number of electrons, then it will be presence a positive or negative ions. Release means positive ions, or accept means negative ions. So positive ion also is happening there, and number of electrons and ion both are combined and mixing of ions and free electrons, then to this type of state will be called plasma. Are you understood clearly, student? Please comment me. Have any doubt, any students about plasma? No, clear. Yes sir, yes sir. Sir, time up now thus. Okay. Time it. Sir, yes sir, yes sir. Okay. The next stage is, yes sir, yes sir. Understood sir, very well. Okay, okay, okay. The next stage is or a certain, means there we also know about huge type of reaction where the atom release their electrons and they present ion, but this condition is must be due to high temperature or electron with respect to the electricity. This type of process will be present in there. It will be does not example of a plasma stage. Okay. If you tell that any teacher or any senior person about plasma cell, this type of condition will be happen with respect to electricity, but it is not all type of condition will be also maintained, and it also build up to this type of stage, but when it is happen with respect to electricity, we are does not tell about a plasma state, physical state of matter, which is plasma state or fourth stage of matter. Okay. Okay, Sumaraj 100. Wow, sir, please tell about ions. Ions means when the atom release its outer shell, release or accept, it will be
applicable to two type of condition. One is release electrons, they need to be positive ions, and when a atoms accept ions, then it will be negative ions also. When chlorine have one electron, we have needed to fill up this outer cell. We have already known that chlorine have chlorine outer cell have number of 7 electrons, so it will be must needed to build up number of 8 electron. Have one more electron have needed to fill number of 8 electrons. So chlorine is minus number 1 electron we accept from any other atoms. So this is the negative ion and sodium is positive ion. So the definition is both condition will be happening there. Divya Singh, no sir. You at first you clearly understood and then replied. This is the positive and this is the negative ions, and I am does not expression about negative ion or positive ion. The ion means any atom when he also release or accept the both condition, which is release or accept electron in both condition, then it will be called ion. When it will be release atom, it will be release electron from its outer shell, it will be called positive ion. And when it is electron in its outer inner shell from any another atoms, it will be called negative ions. Okay, so both condition is happening there, so it will be called ions. Is it clear? Divya Singh, please comment me. Are you clear about ion? Please comment me, Divya Singh. No comment. Okay. Let's go. The next part is Bose-Einstein condensation. BEC. BEC means Bose-Einstein condensation. दोनों number of two scientists on Bose and Einstein, they are research about this condition, physical state of matter. So his name is also given with respect to two scientists. They are Bose-Einstein condensation. Okay. Subham Kumar, no problem. Yes sir, clear sir. Okay. तो क्या हम लोग क्या कमेंट भेजते हैं आप लोग? ओके, यस सर, नो प्रॉब्लम सर, क्लियर सर, यस सर, ओके. Okay, ready for next physical state and last physical state of matter, which is BEC, Bose-Einstein condensation. The definition or form is we known as about an ultraviolet ultra low temperature of about nano Kelvin, that is almost
equal to 0. To 0 means with respect to Kelvin scale. This state is called BEC, and ultra low temperature of about nanokelvin temperature, that is 0, equals to 0. Equals to 0 or nanotemperature equals to 0 means it is almost equal to 0, does not equal to 0. Almost equal to 0, that is 0.111193 etc. This is the one type of example approximate to 0 but does not 0. Are you understood clearly, student? Please comment me. About nanokelvin, that is almost equal to 0 but does not 0. Almost equal to 0 means the value is does not equal to 0. Its value is also is present in there. 0.11193. This is also a value also present in there but not equal to 0 means this value, so some little part of temperature will be also present in there. Repeat again, sir. Okay. Not clear. Okay. About nanokelvin. Nanokelvin means the temperature, ultra low temperature. About nanokelvins means the so little temperature which is approximate to 0 but does not 0. Are you clearly understood, student? Please follow this. Please follow this code, and I have given this example 0.11193, but it is not equals to 0. But actually the value is temperature is 0. But it is not equals to, totally does not equals to 0. Is it clear, student? What is the full form? BEC, Bose-Einstein condensation. Bose, ये हो गया इससे साइंटिस्ट का नाम, उसके बाद आइंस्टाइन, ये हो गया आपका फुल फॉर्म. Full form of BEC, Bose-Einstein condensate. This is the full form of BEC. Okay, condensate means condensation, or this is the state totally present up to this part. Okay. Ravi Pushpa, Ravi, please note down this. The full form of BEC, Bose-Einstein condensate. Ravi, please comment me. Are you clearly understood? Ravi. शिवम सिंह understand sir? Okay. रवि रॉय सर, हम लोग कुछ और समझ जाते हैं. Okay, no problem. So Bose-Einstein condensation is an ultra low temperature about nanokelvin scale. Means ये to this type of temperature is equals to 0.11193. At this temperature, this type of matter, or this type of matter, the physical state will be called Bose-Einstein condensation or BEC. Okay? Are you clearly understood, student? Please comment me. Yes, sir. I am Raj.
Yes, okay. We also describe about the little part of temperature where we also measure temperature. Therefore, you already read out your class 8 syllabus or 7 syllabus. The number of three temperature scale is compared between each other. Therefore, number 1 is Celsius scale, number 2 is Fahrenheit scale, number 3 is Kelvin scale. Okay, please listen my talk and respond it. बोस का स्पेलिंग गलत है। बोस बोस का स्पेलिंग गलत क्यों है यार? ऐसे आप लोग सारनेम का नाम जो है BOAC लिख सकते हैं, BOS भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे उच्चारित किया जाता है। नीरव, नीरव आपसे मैं बोल रहा हूँ। नीरव प्लीज रिस्पॉन्ड। BOAC आप लिख सकते हैं, इसका स्पेलिंग जैसे सारनेम का स्पेलिंग कभी BOS होता है, BOAC भी होता है, इसमें कोई गलत नहीं। ओके, ये सिर्फ एक सारनेम है। वो से स्पेलिंग। Are you understood clearly? Nirav, please comment me. That's not response. Yes, sir, we are done. Okay. Today is no more. Okay, the chemistry class stop here. Next class. You are ready for your next class, students. Now, good morning. Good morning, everyone. Good morning, Sudhanshu, Divya, Shubham, Siddharth, Shubham, Rishabh, Rasmi, everyone. Good morning, Saurabh. Good morning, good morning, good morning, everyone. So, in last class, chapter 2 polymer is completed. So now today start new chapter, and new chapter is coordinate geometry. Chapter number 3, coordinate geometry. So everyone, so friends, now ready to understand coordinate geometry. So coordinate geometry. So okay. बिल्कुल नीरव, today start new chapter. A new chapter is coordinate geometry. So students, now coordinate geometry समझने से पहले हम लोग कुछ सीन करते हैं. सपोज हमारे क्लास में बहुत सारे बेंच लग रही है, जैसे कि 1 2 3 4 5 बेंच लगी हुई है. अब ये यहाँ पर स्टूडेंट बैठे, एक बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठे हैं, 1 2 3 1 2 3 ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं. हाँ,
स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हर एक बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, अब देखो अब क्या करना है कि हमें इसमें से इस स्टूडेंट का लोकेशन फाइंड करना है कि ये स्टूडेंट किस कहाँ बैठा हुआ है, ये स्टूडेंट किस लोकेशन पे बैठा हुआ है। सपोज सभी स्टूडेंट पे 1 2 3 स्टूडेंट है, ठीक है ना। देखो ये बेंच नंबर 1 है, ये बेंच नंबर 2 3 4 5। ध्यान देना, अब ध्यान रखना है कि सेकंड बेंच, ये बेंच नंबर सेकंड है, बेंच सेकंड बेंच पे थर्ड नंबर पे बैठा हुआ है, उसका लोकेशन क्या होगा, सो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है कि हम, तो अब क्या करना है कि आप देख लो ये सेकंड बेंच हुआ, ये सेकंड बेंच है, ये 3 है। या तो अगर आप इधर से काउंट करते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 3 कह सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट को तरफ से काउंट करते हैं कितना होगा, ये तीसरा स्टूडेंट सेकंड बेंच, इसका मतलब ये हुआ। ध्यान देना, अब क्या कर सकते हैं, हम देख लें कि आपके सेकंड बैच के तीसरे नंबर पे स्टूडेंट बैठा हुआ है, इसको 2 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से क्या होता है, हम कह सकते हैं जब कोई किसी भी पॉइंट को अगर लोकेशन फाइंड करना है, when we have to find location of any point on plane is called coordinate geometry। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ये क्या है, ये बोला ये बोर्ड का एक प्लेन है ना। अब ध्यान दो, इस बार हम कह सकते हैं, अब जैसे कि एक टेबल है, सपोज मान लो एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल है, इस टेबल पे यहाँ पे एक लैंप है। अब इस ये लैंप हमारे सपोज पॉइंट ए इज रिप्रेजेंट एज लैंप। अब इस लैंप का लोकेशन फाइंड करना है, लैंप का लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करना पड़ेगा जो कि एज से मिलेगा, टेबल की एज से मिलेगा, इस तरह से। ठीक है, अब इस तरह से मिलता है। अब क्या करना है कि हमें ये ऑरिजिन है, ये ओ है, ध्यान देना, जो होता है कॉर्नर होता है उसको ऑरिजिन लेते हैं। अब ऑरिजिन से हमें इस पॉइंट की, मान लीजिए ये पी है और ये क्यू है, हमें ओपी का लेंथ मेजर करना पड़ेगा। ओपी का लेंथ मेजर करना, मान लो ओपी का लेंथ होता है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, और ये भी होता है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, या ये होता है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर, ये जो कॉर्नर से इधर ये 3 सेंटीमीटर पे है और इधर ये 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट बनेगा ये 3 4 बनेगा। पॉइंट क्या बनेगा, 3 4 बनेगा। अगर हम इधर से, अगर इसको हम 3 4 बनेगा या फिर 4 3 बनेगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हमें इस कॉर्डिनेट ज्योमेट्री या ज्योमेट्री के अंदर समझना है कि हम कैसे लोकेशन फाइंड करते हैं। ठीक है ना। और तब तक देखो हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए एक टेबल है, ये एक टेबल है, जो मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है, ये एक टेबल है। इस टेबल पे कहीं भी एक लैंप रखा हुआ है, ठीक है ना। अब इस लैंप का हमें लोकेशन फाइंड करना है। लैंप, टेबल लैंप समझते ना, या कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर एक पेन रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है, हमें इस पॉइंट का लोकेशन फाइंड करना है कि ये पॉइंट कहाँ पर है। इस टेबल का सरफेस है, ये क्या सरफेस है, जहाँ पर पॉइंट ए लिखा हुआ है ये सरफेस है। इस सरफेस पे हम पॉइंट ए का लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट ए का लोकेशन फाइंड करने के लिए हम स्केल से क्या करेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ए से इस एच की तरफ परपेंडिकुलर ड्रा करना है, फिर यहाँ से इधर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। उस वक्त क्या करना है, ओ से पी का डिस्टेंस मेजर करना है। हम करते सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, फिर ओ से पी का डिस्टेंस मेजर करना है, सपोज ये 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये हो गया, ओपी हो गया 3 सेंटीमीटर और ओपी हो गया 4 सेंटीमीटर। अब देखो, अब यहाँ से परपेंडिकुलर है पी से, तो ये कहाँ यहाँ मिल रहा है, इधर क्यू से ये मिल रहा है, तो ये 3 है, ये भी 3 हो गया, ये 3 है, ये भी 3 हो गया, ये 4 है, ये भी 4 हो गया। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा या तो बनेगा 3 4 बनेगा, 3 4 कह सकते हैं या 4 3 कह सकते हैं। अब देखो 3 4 4 3 कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसको अब समझते हैं। ठीक है, अब देखो ठीक है। हमें लगता है जिनका स्मार्टफोन है ये बहुत अनवांटेड मैसेज करते हैं, इनको ब्लॉक करना पड़ेगा। चलिए, तो इसके लिए हम इसको हिस्ट्री समझते हैं। अपने बुक देखिए, तो एवरीवन ओपन बुक नंबर 53। सो एवरीवन ओपन बुक एनसीईआरटी एंड पेज 53। और देखो यहाँ पर तुम्हें मैथमेटिक्स के बारे में बताया है, इसकी बायोग्राफी हम समझते हैं, ध्यान देना। रेने डिस्कार्ड द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ द 7th सेंचुरी लाइक टू लाइक इन बेड एंड थिंक। एक रेने डिस्कार्ड, रेने
Descartes was a mathematician from French. This was French mathematician. ये कौन सा कहाँ का था ये mathematician? French का था ये, ठीक है ना? इसको क्या हुआ कि like in bed and think, वो बेड पे था और सोचा one day when resting in bed, जब वो एक दिन बेड पे रेस्ट कर रहा था तो उस टाइम उन्होंने एक थिंक किया कि हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी पॉइंट का लोकेशन कैसे फाइंड किया जा सकता है। जब किसी भी पॉइंट का लोकेशन फाइंड करने के लिए उसने बताया, इससे पहले लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में समझते हैं, जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इससे बस एक ज्योमेट्री है, ये बस ज्योमेट्री की वही है। जैसे कि वहां पे ऊपर ये होता है तुम्हारा लॉन्गिट्यूड होता है, लैटिट्यूड होता है, यहाँ पर भी होता है तुम्हारा, ये आगे बताएंगे अभी, ठीक है ना। तो उसने बताया कि हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसका उसने सोचा दिस मेथड वाज डेवलप्ड ऑफ द ऑल्डर आइडिया, तो उसने बताया इन द सेंस ऑफ डिस्कार्ड्स द सिस्टम्स, जो तुम्हारे बुक में गिवन है, द सिस्टम used for describing the position of a point in a plane is also known as Cartesian plane. Cartesian plane, देखो अब क्या किसी ध्यान रखिए, the system used for describing a position of a point in a plane is also known as, हम किसी भी पॉइंट को प्लेन में किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे कहते हैं सर स्मॉल लिखिए ना, ठीक है ना। तो क्या क्या करते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट को प्लेन में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन आपके बुक में डेफिनेशन ध्यान दीजिए, देखिए पेज नंबर 53, द सिस्टम अकॉर्डिंग टू रेने डिस्कार्ड, the system used for describing the position of a point in a plane is also known as the Cartesian plane. ध्यान दीजिए, जब क्या होता है कि the system used for describing the position of a point, the system used for describing the position of a point in a plane, जब प्लेन में किसी भी पॉइंट के लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है। समझ में कार्टेशियन प्लेन the system used for describing the position of a point in a plane is also known as Cartesian plane, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया कार्टेशियन प्लेन। अब ध्यान देना, ओके, ज्योमेट्री इज वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट वन, अब हम समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। ध्यान रखना, coordinate geometry is discovered by Rene Descartes. This cards. It's okay. Now next one, what is coordinate geometry? Coordinate geometry. ध्यान देना। The branch of mathematics in which geometry problem. So कह सकते हैं the branch of mathematics, the branch of mathematics in which
problem are solved by through algebra by using the coordinate system. Coordinate system is known as coordinate geometry. Known as coordinate geometry. The branch of mathematics in which geometric problems are solved by through algebra by using coordinate system is known as coordinate geometry. So okay, ठीक है ना, ये तुम्हारा coordinate geometry का डेफिनेशन है। आगे हम आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना? Good afternoon, very good job. चलो next one. दिव्या सिंह, वेरी गुड। अब देखिए इतनी बात से समझ में आई ना। अब इसके बाद देखते हैं कि अब जैसे कुछ स्ट्रीट होती है, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे कोई कॉलोनी बनता है तो उस कॉलोनी में बहुत सारे स्ट्रीट बनते हैं। तो जैसे ये हुआ, ध्यान देना, इधर 1 2 3 4 5 एक स्ट्रीट इधर से भी है, 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब हमें ये पता करना है, अभी हमें ये पता करना है कि हमें यहाँ पे फोर्थ स्ट्रीट के थर्ड नंबर कहाँ मिल कर रहा है। फोर्थ स्ट्रीट देखिए, ये हुआ इधर, ये फोर्थ स्ट्रीट हुआ, ये फोर्थ स्ट्रीट है और ऊपर से थर्ड स्ट्रीट है, यानी कि ये हुआ 4 3। ये पॉइंट क्या हुआ 4 3, यानी क्या हुआ, इधर से फोर्थ स्ट्रीट हुआ, ये चौथी गली है और इधर से तीसरी गली है। दोनों जहां ज्वाइन कर जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, हम 4 3 कहते हैं। ठीक है, इस तरह से और फाइंड करना है। अगर समझना है हमें कि थर्ड स्ट्रीट का पांचवी गली कहां ज्वाइन दोनों मिल रहे हैं। देखो तीसरी गली है, थर्ड स्ट्रीट ये है और ये फिफ्थ स्ट्रीट है, दोनों जहां ज्वाइन करते हैं ये क्या है, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे 3 5। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम जिसको चौराहे होते हैं, अब जो चौराहे होते हैं जिसको क्या होता है कि बहुत सारे रोड क्या आते हैं कि कुछ इधर से आते हैं, ठीक है ना, और कुछ इधर जा रहे होते हैं। अब जहां मिल गए तो दोनों में इसको कोई ना कोई पॉइंट कहेंगे ना, ये कोई कोई पॉइंट होगा, इसी पॉइंट जो लोकेशन होता है, इसी लोकेशन को जो रिप्रेजेंट करता है उस ब्रांच को हम ज्योमेट्री कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है इसे। ठीक है ना, बिल्कुल रॉ कॉलम सबसे बताएंगे अभी तो मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं अभी, है ना, उसको भी बता रहे हैं अभी रॉ कॉलम सब कुछ। ठीक है, अब देखो अब चलो, अब हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। बस ये फिगर समझ में आ गया, समझ कोऑर्डिनेट पूरी समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। ध्यान देना, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, इट्स ओके। हियर इज कॉल्ड x dash y and y dash. This is the origin. This is the origin. ध्यान दें, this is a Cartesian plane in which two axes, x axis and y axis. ध्यान देना, फिगर बहुत बढ़िया समझना है। ये पूरे ज्योमेट्री का एक बेसिक पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान देना। अब क्या होता है यहाँ पर, अब देख लेंगे x o x dash, x o x dash, x o x dash is called x axis।
x axis. X O axis is called x axis. It's okay. And y o y dash is called y axis. Y axis. It's okay. ध्यान दो. x o x dash is called x axis and y o y dash is called y axis. X o x dash is also called abscissa. X o x dash is also called abscissa and y o y dash is also called ordinate. Y o y dash is also called ordinate. X o x dash is also called abscissa. We can say that x o x dash is called horizontal line and y o y dash is called vertical line. अब ध्यान रखना है आपको. देखो इसके तीन नियम होते हैं. x o x dash को हम x axis कहते हैं, abscissa कहते हैं या फिर horizontal line भी कह सकते हैं. But y o y dash को कहते हैं y axis, vertical line और ordinate value. अब ध्यान दें. अब यहाँ पर क्या होगी तुम्हारे, अब ये जैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 2 3 4 5. जब हम आएंगे लेफ्ट साइड तो -1 -2 -3 -4 -5. जब अप की ओर जाते हैं तो 1 2 3 4 5. जब डाउन आओ -2 -3 -4 -5. ध्यान देना, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है. जब 1 होगा 2 3 4 और ये -5. ध्यान देना. अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट ये x o y, ये जो फर्स्ट है तुम्हारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट. ध्यान देना. A Cartesian plane is divided, समझ में नहीं आ रहा है. A Cartesian plane is divided into 4 parts. A Cartesian plane is divided into 4 parts and each part is called quadrant. Each part is called quadrant. This is the first part, this is the second quadrant, this is the third, is the fourth quadrant. So okay, ध्यान देना है. अब देखो, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारे OX आ गया, ये OY हो गया. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है तुम्हारा OX है और OY है. अब ध्यान देना. अब OX में देखते हैं, OX में सभी वैल्यू प्लस की है, OY में सभी वैल्यू प्लस की है. यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन हो गया तुम्हारा प्लस प्लस. साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट इज प्लस प्लस. एंड अब ध्यान देना यहाँ पर. अब फिर अब सेकंड में क्या है तुम्हारा, सेकंड में तुम्हारा OX dash एंड OY. यानी कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आती है तुम्हारे OX dash की आती है और Y की आती है. OX dash तुम्हारा OX dash की सही वैल्यू क्या नेगेटिव है, सभी वैल्यू नेगेटिव है, यानी OX का साइन क्या नेगेटिव होता है. और देखो, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, ये OY की सभी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी इसके साइन पॉजिटिव होता है. इट मींस साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट इज माइनस प्लस. अब देखो फिर थर्ड में आ जाओ. थर्ड में क्या देखते हैं यहाँ पर, थर्ड में तुम्हारा होती है यहाँ पर OX dash एंड OY dash. थर्ड क्वाड्रेंट किसी में क्यों बना है, OX and OY dash. And when the sign of OX dash is negative and sign of OY dash also negative. So sign of third quadrant is negative, minus. ध्यान देना. उसके बाद देना है फिर फोर्थ क्वाड्रेंट. जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो ध्यान रखना स्टूडेंट, हमेशा क्या होता है जब कोई भी कोऑर्डिनेट वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है तो वहां पर हमेशा XY के फॉर्म होता है. जो बताएंगे XY के फॉर्म होता है. इसलिए हमेशा आप तुम देख रहे हो ना, अभी तीन क्वाड्रेंट के बारे में बताया मैंने, सभी में पहले हमने x की वैल्यू ली है. अब देखिए यहाँ पर भी वही बात होगी. फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले x की लेंगे वैल्यू, x की वैल्यू है ये मतलब OX एंड y की वैल्यू है तुम्हारी OY dash. इसको के अब साइन देखिए, वैल्यू ऑफ OX इज पॉजिटिव एंड वैल्यू ऑफ OY dash इज नेगेटिव. अब ध्यान दो, इस तरह हम समझ सकते हैं कि साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव प्लस प्लस, साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस एंड साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस. हमें ये समझना बहुत जरूरी है. क्या हमें ये समझना बहुत जरूरी यहाँ पर है कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन जो होता है पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की साइन माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट की साइन प्लस माइनस एंड फोर्थ प्लस माइनस होता है. अब ध्यान दो, इतनी बात ठीक है.
अब देखिए, अभी जो होते हैं जब जब कोई भी कोऑर्डिनेट जब रिप्रेजेंट किया जाता है उस कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट होता है तुम्हारा x y x y x y। जो x की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं अभिशिक्षा कह सकते हैं, y होती है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। यानी x की वैल्यू होती है x एक्सिस की वैल्यू हो सकती है, x एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ हो सकते हैं, फिर y एक्सिस की वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो सकते हैं। किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी कोऑर्डिनेट को ठीक है ना। अब समझ लें जो है देखो पुष्पम कह रहा है अंडरस्टूड सर, ध्यान देना पुष्पम उज्जवल जो भी स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं अभी सर ध्यान दे। मैं देख रहा हूं कि आप आज की क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट अनवांटेड चैट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिससे तुम्हारी परेशानी होगी, आगे तुम भी नहीं समझ पाओगे। जब अभी तो यहाँ पर क्लास 9th में ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट का बेसिक पॉइंट है, सिर्फ हमें ये कार्टेशियन प्लेन समझना है। 9th में 10th में सिर्फ मतलब एडवांस होता है, आगे बहुत एडवांस होता जाता है, इस टाइम समझना बहुत जरूरी है। शुभम सिंह यस सर। देखो स्टूडेंट शुभम, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, अभी सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्लेन समझना है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन में हम किसी भी पॉइंट को लोकेट किया जाता है, या फिर किसी पॉइंट को कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, क्या करते हैं पहले उसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ध्यान रखना, कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। It means first, second, third, and fourth quadrant. Cartesian plane has 4 parts. Each part is called a quadrant. Sign of first quadrant is positive. This means plus plus. Sign of second quadrant is minus plus. Sign of third quadrant is minus minus. And sign of fourth quadrant is minus plus minus. अब देख लो, तुम्हें यहाँ पर एक चीज के लिए तो तुम्हारे बुक में साइन सब दिया हुआ है, सभी का साइन दिया हुआ है, ध्यान दे। एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में साइन दिया हुआ है सभी, है ना। हम क्या कर सकते हैं, अब साइन इतनी बात समझ में आई ना, ये बात समझ में आ गई है, तो आगे तुम्हें क्या बता रहे हैं, इतनी बात समझ में आ गई तो समझिए आपका ज्योमेट्री ये कोऑर्डिनेट चैप्टर खत्म हो गया। अगर तुम्हें कार्टेशियन प्लेन की वैल्यू समझ में आ गई तो हमारा चैप्टर क्लीन हो गया। अब ध्यान देना स्टूडेंट, होता क्या है, आगे चीजें बता रही है, ऑरिजिन है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। Intersection point of x axis and y axis is called origin. Origin is represented by O. Origin is represented by O. Intersection point of x axis and y axis is called origin, and origin is represented by O. And coordinate of origin 0. Coordinate of origin 0 या इसको O कहते हैं, ठीक है ना। ये 0 समझ लीजिए, इसको 0, इसका होता है तुम्हारा 0 0। हमें क्या होता है कि कभी भी हमेशा कार्टेशियन प्लेन में ऑरिजिन को O से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ O इज 0 0। एक्चुअली यहां पर क्या होता है कि हम x एक्सिस y एक्सिस दोनों की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि यहां से हमें किसी भी पॉइंट का लोकेशन यहीं से फाइंड किया जाता है, किसी भी लोकेशन यहीं से फाइंड किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई ना, ठीक है, ओके वेरी गुड। तो ध्यान रखना, पेपर में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0, राइट द साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस 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 प्लस, राइट द साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ फिफ्थ कोई भी आ सकता है। ध्यान रखना है, मैं के अभी बता दूं, फिर साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, साइन ऑफ ये वैल्यू की x y के फॉर्मेट में होता है, जो वैल्यू होती है x y के फॉर्मेट में होती है। साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, sign of third quadrant is minus minus, and sign of fourth quadrant is plus minus। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, साइन समझ में आ गया, अगर साइन समझ में आ जाता है तो आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो आराम से। इससे पहले मैंने बताया नहीं, जब हमें इससे पहले क्या करते थे, जब हम क्लास 8 में थे उस टाइम में सिर्फ एक नंबर लाइन होता था, ऑर्डिनल नंबर होता था, उसमें हम रेशनल नंबर, अभी तुमने क्लास 9 में इससे पहले रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना सीखा, तो वहां पर क्या होता है, एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। अब यहां पर नंबर पेयर में है, पेयर जो जब कोई नंबर पेयर में होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक अदर सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में क्या करते हैं, वो भी हम प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो वहां पर भी हम जो नंबर रिप्रेजेंट करते थे नंबर लाइन पे, वो भी प्लेन ही होता था। यहाँ पर भी प्लेन ही है, लेकिन यहाँ पर वहां पर सिंगल नंबर होता था, यहाँ पर पेयर में नंबर है। पेयर में नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पेयर में चाहिए नंबर लाइन। पेयर में जो नंबर लाइन चाहिए, तो पेयर नंबर जो नंबर चाहिए, उसको पेयर में नंबर जो होते हैं दोनों एक दूसरे के
ये वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एंड जो सॉरी जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो होती है वर्टिकल उसे कहते हैं वाई एक्सिस। एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन इज 0 0। ध्यान रखना है, अब जो वैल्यू राइट की तरफ जाएगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, जो अप की तरफ जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो लेफ्ट की तरफ आएगी जो वैल्यू होगी सभी नेगेटिव होगी, और जो फिर डाउन तरफ जाएगी वो वैल्यू भी नेगेटिव होगी। बस ये चीज समझनी है। इस तरह से साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट प्लस माइनस प्लस, साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, एंड साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल पुष्पम चैप्टर बहुत तेजी, दिस चैप्टर इज पुष्पम वेरी इजी, वेरी गुड। देखो मैं बताऊं, अभी जो ये चैप्टर मैं करा रहा हूं अभी, इसके बाद जो मैं कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर एक लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो भी बहुत इजी है। ये दोनों चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, रफत क्या कर चुप साथिया, क्या हो रहा, क्या क्या बात हो रही है अभी? ठीक है ना, अपना माइंड बिल्कुल सेटअप रखो, जब क्लास करना है उस टाइम बिल्कुल कंसंट्रेट होके बिल्कुल फोकस करना है पढ़ाई पे। जैसे फालतू बात करोगे, फालतू बात दिमाग में जैसे आएगी बस तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगी और फिर समझ नहीं पाओगे। तो ये बात समझ में आ गई ना, काटने से पहले समझ में आ गया? अब देख लो, बहुत इजी है। आपके पास एनसीईआरटी बुक है और हो सकता है आपके पास रेफरेंस बुक भी होगा, उसको स्टडी करना, भी रीडिंग करना, देखना, बहुत कुछ समझ में आएगा। हो सकता है जो कुछ मैंने नहीं बताया होगा, कुछ चीजें नहीं बताई होंगे, वो भी समझ में आ गया होगा, वो भी समझ में आएगा। क्योंकि कुछ भी अगर रह गया होगा फिर से बताएंगे। ठीक है ना? अब ध्यान देना। अब देखो, ये कार्टेशियन प्लेन है, पहले मैंने बताया ये कार्टेशियन, दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, दिस इज कार्टेशियन प्लेन 0 1 2 3 4, then 1 2 3 4, that's it, -1 -2 -3 -4, then will -1 -2 -3 -4। अब ध्यान देना, ये तुम्हारा x डैश, ये y एक्सिस। मैं बताना चाह रहा था, अब जैसे कि मान लो कि अगर हम यहाँ पर 2 3 पर क्या हम अब यहाँ पर समझेगा हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट, हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। Suppose that here we have to represent 3 5, we have to represent 3 5. So here actually coordinate, standard form of coordinate is xy. It means value of x here 3 and value of y here 5. So and both value is in positive. So this point is in first quadrant. So here value of x is 3, value of x is 3, x is 3 and y is 5. So here 5 is not given, so take another value of 5. So 3 5 3 5। अब दोनों नंबर से करना है कि हमें परपेंडिकुलर ड्रा करनी है, परपेंडिकुलर स्केल के थ्रू डॉट लाइन से उसको मैच करेंगे, दोनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे जाके मैच करेगा वो हो जाएगा तुम्हारा 3 5। ये हो गया 3 5, ठीक है ना? ये वाला 3 5। और ध्यान देना, अगर तुम्हें यहाँ पर 5 3 रिप्रेजेंट करनी है, 5 3 रिप्रेजेंट करनी है, अब ध्यान दो 5 3 मतलब ये x y, अब वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पर, अब x की वैल्यू 5 हो रही है, y की वैल्यू 3 हो रही है, 3 5। अब 5 3 रिप्रेजेंट करनी है 5, अब x की वैल्यू 5 होगी, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, अब देखना है, अब 3 से भी परपेंडिकुलर लगा, दो जहाँ मैच कर जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 3। स्टूडेंट ये चीज से आप तुम समझ पा रहे हो यहाँ पर कि आप देख रहे हैं कभी भी दो पॉइंट होते हैं, जैसे कि ये 3 5 और 5 3, अगर दो पॉइंट है तो दोनों पॉइंट का लोकेशन कभी एक नहीं हो सकता है, ठीक है ना? जब x y की वैल्यू डिफरेंट है, तो दोनों पॉइंट का लोकेशन सेम नहीं हो सकता, यानी कि ये होगा नॉट इक्वल। इसका मतलब ये होगा कि x y इज नॉट इक्वल टू y x, ठीक है ना? ये इक्वल हो सकता है, इक्वल कब होगा? जब x और y दोनों की वैल्यू सेम होगी, जब x और y दोनों की वैल्यू सेम होगी। सपोज x की वैल्यू भी 2 होगी और y की वैल्यू भी 2 ही होती है, तो क्या होगा? x y एक बनेगा पेयर x y और x y जब पेयर बनता है तो क्या होगा तुम्हारा? ये भी 2 2 है
इधर भी वैल्यू 2 है और यहाँ भी इधर भी वैल्यू 2 है और दोनों कोऑर्डिनेट क्या सेम है। तो हम ये जो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर कोई कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट है उस पॉइंट में x y की वैल्यू डिफरेंट है तो जब उसका ऑर्डर चेंज होगा यानी जैसे देखो यहाँ पर 3 5 था ये x y को 3 5 है ये 5 3 हो गया दोनों का लोकेशन सेम नहीं हो सकता दोनों का लोकेशन सेम नहीं हो सकता समझ गए। चलो ये बात समझ में आ गई ना। इस तरह से पॉइंट को लोकेट करना है। सपोज मान लो कि हमें अब लोकेट करना है -2 3 -2 2 2 3 करना है -2 ये पहला x होता है दूसरी वैल्यू y होती है। अब देखना है x की वैल्यू -2 है x की वैल्यू -2 है -2 ये है चलो -2 -3 रिप्रेजेंट कर लेते हैं। x की वैल्यू -2 है x की वैल्यू -2 देखो ये है ना ये x एक्सिस की वैल्यू है ये इधर -2 है और y की 3 है तो इसको ऐसे नीचे लेके आ जाएंगे और -3 ये वैल्यू हो गई तुम्हारे -2 -2 इस तरह से हम क्या करेंगे कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ठीक है। चलिए इसके आगे अब देखते हैं यहाँ पर ये फिर एक और ये अब लास्ट स्टेप है ये ध्यान देना ये 0 है। अब देखो 1 2 3 इधर भी है 1 2 3 इधर -1 -2 -3 इधर भी -1 -2 -3। अब देखिए स्टूडेंट सपोज मान लो कि कोई वैल्यू यहाँ पर पड़ती है रिप्रेजेंट है कोई वैल्यू यहाँ पर है कोई वैल्यू यहाँ पर है तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोई वैल्यू अगर यहाँ पर 3 पर कोई वैल्यू है कोई पॉइंट 3 पर है अगर हम एक करेंगे तो कोई पॉइंट 3 इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर तो क्या है 1 2 3 x की वैल्यू 3 है x तो 3 हो गया क्योंकि y की वैल्यू कुछ भी नहीं है यहाँ पर y की वैल्यू नहीं है क्योंकि y तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे अभी हमें तो इसके सामने मतलब x एक्सिस पर ही रिप्रेजेंट हो रहा है वैल्यू ये यानी यहाँ पर y कितना हो जाएगा 0 y कितना हो गया 0। अगर सपोज हमें यहाँ रिप्रेजेंट करनी है अगर कोई वैल्यू यहाँ पर है तो इस 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं प्रोग्राम लिखेंगे 0 कोई वैल्यू अगर x एक्सिस पे है x एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखते हैं x0 और कोई वैल्यू अगर y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करनी है तो होगा जैसे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 03 क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो 0 है 0 और y की 3 यानी कि 0y। ध्यान रखना है अगर कोई भी वैल्यू अगर कहीं पर दिया हुआ है कि 30 इज रिप्रेजेंटेड या 30 रिप्रेजेंट्स ऑन कहां हो जाएगा ये x एक्सिस 30 इज रिप्रेजेंट ऑन x एक्सिस और 03 इज रिप्रेजेंट ऑन y एक्सिस यानी कि अगर x 0 है तो x एक्सिस पे है अगर 0y है तो कहां पर है ये y एक्सिस पे है हां ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए बहुत इतना ही है ना और ये जो एक्सरसाइज दिया उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके सेट करना और फिर जो बाकी रह जाएंगे वो आगे बताएंगे। ओके सो ओके नाउ टाइम इज ओवर बाय बाय। जो भी प्रॉब्लम रह जाएगा वो कल कंप्लीट कर देंगे ठीक है ना। चलिए ओके।